A Watcher of the Dead by Nadine Gordemir. It is a short story and it talks about the Apartheid movement. So now before we begin into the video, I'll talk about author and era, how this era has influenced the work and what are the impacts on youth and adults. So, and we'll talk about what aspects of this short story reflects on the biography of the author, and that includes 3 4 points or elements. Then we'll talk about the characters, the major and the minor, and the crux of it, and later on the plot, the summary, and the critical analysis. So I have also included the quotation as well as the explanation for it, because there is nothing provided on Google and YouTube about this particular short story. And I have later on discussed the major themes as well, and how those themes are aligned with the quotations of this specific short story. And not forgetting the discussions later on after we are done with the summary and the critical analysis, and also the figurative devices that are very important, and it influence the whole short story. And even in the critical analysis, those elements like figurative devices are used to enhance the overall picture of the short story or any literary piece. And lastly, with the conclusion as well. So let's begin with the lecture. ये एक शॉर्ट स्टोरी है, अ वॉचर ऑफ द डेड, और इसके ऑथर का जो नाम है वो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, नदीन गॉर्डमूर। तो अब इस शॉर्ट स्टोरी में अपार्थाइड मूवमेंट की बात की गई है कि लाइक अ वॉचर ऑफ द डेड जो है एक शॉर्ट स्टोरी है दैट टेक्स प्लेस इन अपार्थाइड एरा साउथ अफ्रीका। तो ये जो ऑथर है वो साउथ अफ्रीकन ऑथर है। अपार्थाइड मूवमेंट 1950s और 1960s में शुरू हुआ था, और इसका जो मेजर प्रोपोनेंट है, द मोस्ट prominent proponent of apartheid movement was नेल्सन मंडेला। और इस मूवमेंट में या इस पीरियड में ब्रूटल रेशियल सेग्रीगेशन था, जैसे कि एक इंसान को या कम्युनिटी या कास्ट या इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को कलर के बेस पे जज करना, स्किन कलर, यू आर वाइट एंड आई एम ब्राउन, एंड यही जो वेस्ट में होता आ रहा है कि every white Englishman has every right to survive and enjoy his life, लेकिन black या Asians are never given their due rights। तो apartheid movement में ये था कि like we should put an end to this racial discrimination या segregation। अगर एक इंसान ब्लैक है या वाइट है या वट एवर स्किन टोन ही और शी इज़ हैविंग, तो इस पे लाइक इंसान तो है ना, लाइक क्यों उसको लाइफ गुजारने का राइट नहीं है या अपनी मर्ज़ी से लाइफ नहीं गुजार सकता? व्हाई इज़ दैट सो? सो इस अपार्थाइड मूवमेंट में ये डिस्कस किया था कि हाउ पीपल आर ऑप्रेस्ड बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इधर जो है, वेयर द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड डिनाइड बेसिक राइट्स टू द ब्लैक मेजॉरिटी पॉपुलेशन।
तो अफ्रीका में तो सारे मोस्टली मेजॉरिटी ब्लैक कम्युनिटी है। और क्योंकि ये जो वाइट इंग्लिशमैन है ये आ गए थे एंड दे वर इन माइनॉरिटी, इनने गवर्नमेंट फॉर्म की एंड देन कुछ ऐसे लॉज बनाए कि इनको इवन इनके ड्यू राइट्स या बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे टू इवन सरवाइव दैट टाइम। तो इवन वाइट मैन के लिए अलग से रूम बनाया जाता था कि वाइट मैन या दे आर सो प्रिविलेज्ड कि दे शुड बी हैविंग अ प्रॉपर रूम फॉर द वेटिंग एरिया। और जो ब्लैक थे तो उनको बाहर रोडों पे खड़ा करते थे। सो हाउ awful it is. The basic definition or the literal definition of apartheid movement is that it's a formal policy of segregation and political, social and economic discrimination against the non-white majority in the Republic of South Africa. तो ये extreme racial segregation है of apartheid that lasted from 1948 to 1994 and included such restrictions as were people of certain races. तो इधर डिफरेंट रेसेस के लोगों को बहुत restrictions थी। तो एपेथाइड में हमारे पास है कि किस तरह नॉन वाइट या ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स ने किस तरह की रियलिटीज़ को फेस किया है इन टर्म्स ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड ऑपरेशन बाय वाइट कम्युनिटी। एंड जो हमारे पास ऑथर है नदीन गॉर्डमू, तो वो एक साउथ अफ्रीकन ऑथर है नोन फॉर हर अनफ्लिचिंग पोर्ट्रियल ऑफ अपेटाइड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब इसने ये जो हमारे पास ऑथर हैं इनने इस शॉर्ट स्टोरी में अपेटाइड को डिस्कस किया गया है। और असल में अभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे तो इसकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे और हर ऑथर की जो भी लाइफ में होता है बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी जो हम पढ़ते हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है उनके जो वर्क्स हैं उनमें। तो जो कि ये साउथ अफ्रीकन ऑथर है हमारे पास, ये जो और इनका जो ये वर्क है अ वॉचर ऑफ द डेड, तो ये सर्टेनली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन हर वर्क। और ये ऐसा नहीं है कि ये टोटली रियलिटी पे बेस्ड है, ये फिक्शनल स्टोरी है, बट स्टिल एवरी ऑथर्स like kind of biography reflects on their work, so we'll study it later. तो हमारे इस ऑथर ने कहा है कि किस तरह हर एक इंडिविजुअल और सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस तरह के अपार्थाइड का, और किस तरह रेशियल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशंस या सेग्रीगेशंस हैं या ऑपरेशंस हैं। हमारे पास एक और नावल है, इट्स बाय टोनी मॉरिसन, द ब्लू आइज़। वो भी इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। इफ़ यू पीपल हैव टाइम इवन गो थ्रू इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुली रिटन। और जो एक्सपीरियंसेस हैं जो ऑथर ने हर कैरेक्टर के, पेकोला इसमें जो है प्रोटैगनिस्ट थी, व्हाट शी गोज़ थ्रू, मतलब बहुत ही वेल रिटन है। यू पीपल शुड गो थ्रू इट। टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑन यूथ एंड एडल्ट्स, सो यंग रीडर्स जो हैं वो थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी क्राइसिस है, प्रेजुडिस है या बाइसेस है, एंड सोशल जस्टिस है। तो वाइल रीडिंग दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी यंग रीडर्स ये थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं। बट टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, तो ये एडल्ट्स जो है दे गेन इनसाइट इनटू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपार्थाइड एंड इट्स ह्यूमन कॉस्ट। एडल्ट्स जो है वो थोड़े उनके माइंड ब्रॉड होते हैं, देयर मेंटल हराइजन इज़ ब्रॉड, सो दे गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपार्थाइड कि किस तरह ये मूवमेंट शुरू हुई थी एंड व्हाट are the basic rights of human and how a human has costed life, or humans have costed their lives, and everything they have put their lives at stake for this apartheid movement because justice को prevail होना चाहिए। There is another movie I would recommend, The Green Book। बहुत एक अच्छी है, उसमें जो कंटेंट है, द मीनिंग दैट मूवी प्रोवाइड्स इज़ वंडरफुल। उस ग्रीन बुक में क्या होता है कि एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन होता है एंड ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड बट ही इज़ नॉट गिवन हिज ड्यू राइट्स। So I would highly recommend you guys to watch it for your own knowledge
and for your own purpose of gaining information. तो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, एडल्ट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं, जैसे कि अपार्थाइड मूवमेंट या इवन ऑन गोइंग वेस्ट में जो अभी तक ब्लैक मैन को एक ड्यू राइट नहीं मिलता और दे हैव वायलेंस इन देयर लाइफ। तो ये शॉर्ट स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है ऑथर की बायोग्राफी पे भी, मतलब सर्टेन एलिमेंट्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी में जो कि ऑथर की बायोग्राफी रिफ्लेक्ट होती है, एंड हर ऑथर की बायोग्राफी उनके वर्क्स में रिफ्लेक्ट होती है। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। First element is the personal experience. So Gordemir grew up in South Africa during apartheid and witnessed its injustices firsthand. सबसे पहले तो ये पैदा होते साथ ही she experienced injustices, ठीक है? Then her writing often explores themes of race, power and identity, drawing upon her own observations and experience. तो इसकी जो राइटिंग में जितनी भी वर्क्स हैं उसकी राइटिंग की थीम्स, मेजर थीम्स जो हैं, दैट टॉक्स अबाउट रेस, पावर एंड आइडेंटिटी. The next we have is the historical context. So the story accurately portrays the realities of life under apartheid. apartheid मूवमेंट में किस तरह की लोगों की लाइफ की रियलिटीज़ थी, ठीक है, वो इस स्टोरी में एक्यूरेटली पोर्ट्रे किए हैं, including the segregated funeral practices, the constant surveillance of black communities and the fear of white authority. अच्छा, अब इनके जो है दफनाने के या फ्यूनरल प्रैक्टिसेस हैं वो सेग्रीगेटेड थे, वो डिफरेंट थे, उनको डिफरेंट रखा गया था. द कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस ऑफ ब्लैक कम्युनिटी, सर्वेलेंस मतलब टू कीप एन आई ऑन समबडी, या अपनी नज़रों में उनको रखना जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, और जैसे कि सर्वेलेंस कैमरास होते हैं, ये सीसीटीवी कैमरास जो कि दे रिकॉर्ड एवरीथिंग सो दैट वी पीपल हैव द बैकअप ऑफ वट एवर इंसिडेंट हैपन सो वी कैन फाइंड द कल्प्रिट. लेकिन इधर बात अलग है, द कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस ऑफ ब्लैक कम्युनिटीज़. वाइट कम्युनिटी जो है वो ब्लैक कम्युनिटी पे नज़र रखती थी, सो टू grab or do not give them their due rights. हर चीज़ में उनको they put these black community people behind the bars. And then the fear of white authority. तो जब एक white authority ऊपर आएगी and he or whatever the community, it would be very dominant over the black community. जैसे कि है ना एक फेमिनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है कि पेट्रार्की इज़ ऑलवेज इन द सेंटर एंड वेमेन आर ऑलवेज इन द पेरिफरी. तो इस तरह वाइट जो है ये बाइनरी ऑपोजिशन है, ब्लैक एंड वाइट. तो वाइट इज़ ऑलवेज इन द सेंटर एंड ब्लैक इज़ ऑलवेज इन ऑन द पेरिफरी. देन सोशल कमेंट्री. Gordemir was a vocal critic of apartheid and used her writing to challenge the racist system and raise awareness of its impact on individual and society. A Watcher of the Dead serves as a powerful commentary on the human cost of apartheid and the need for social justice. सोशल कमेंट्री हमारे पास ये है कि गॉर्डमूर जो है वो शी वॉज़ वेरी वोकल अबाउट अपार्थाइड मूवमेंट, या कोई भी इनजस्टिस हो रहे हैं सोसाइटी में, सिस्टम में, वो उसके ऊपर अवेयरनेस रेस करती थी कि इस चीज़ के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हैं इंडिविजुअल्स पे या सोसाइटी पे, किस तरह ये एक पर्टिकुलर चीज़ कितना अफेक्ट कर रही है इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को. जिस तरह की ये शॉर्ट स्टोरी है अ वॉचर ऑफ द डेड, तो ये एक पावरफुल कमेंट्री है ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अपार्थाइड एंड द नीड फॉर सोशल जस्टिस. हर इंसान को उनके पास सोशल जस्टिस होनी चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू लिव होना चाहिए, द वेरी बेसिक राइट टू लिव. तो talking about social commentary, even this whole short story is not available on Google and no video is made on YouTube as well. So this is one of the stance you can take. So additional points add किए हैं मैंने कि आप लोगों के लिए आसानी हो, and you people should read it yourself. And I'll move towards the next characters. पास जो मेजर कैरेक्टर्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी में,
So those are Clara, one is Miriam, one is Clara's parents, and the last one is the mourners. So Clara जो है ये white teenager होती है, grappling with her identity and confronting racial boundaries. The next we have is the Miriam. ये एक young black woman grieving the loss of her brother. The next we have is the Clara's parents. तो ये represent करते हैं white establishment को कि किस तरह white community में ingrained है एक चीज़ इनके अंदर मौजूद है racial attitude, how they think of the black community less of them. And then we have the mourners. मतलब ऐसे लोग जो मातम करते हैं क्योंकि मीरियम का भाई भी मर जाता है, तो ये मोurners जो है ये सिंबलाइज करते हैं कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स अंडर अपार्थाइड. सो थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी मोurners जो है सिंबलाइज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अपार्थाइड या अपार्थाइड मूवमेंट को, द कलेक्टिव एक्सपीरियंस, कलेक्टिवली जो लोगों का स्टांस है ओवर अपार्थाइड, ये वो एक्सप्रेस करते हैं. Coming towards the plot of this short story, so the story revolves around a white South African teenager named Clara living in a racially segregated society during the apartheid era. अब ये एक वाइट साउथ अफ्रीकन टीनेजर के ऊपर ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है क्लारा, और वो पैदा होते साथ ही ये एग्ज़ामिन करती है कि किस तरह हमारी कम्युनिटी में रेशियली सेग्रीगेशन है और किस तरह ये अपार्थाइड एरा शुरू हुआ है. सो शी डेवलप्स अ peculiar fascination with attending black funerals, drawn by a morbid curiosity and a desire to understand the life and death of people from different worlds. अब ये क्लारा जो है ये डिफरेंट फ्यूनरल्स पे पहले दूर दूर से देखती थी, उसके बाद ये जो है करीब करीब से लोगों के फ्यूनरल्स देखती थी, एंड शी वाज वेरी क्यूरियस. इसके अंदर बहुत क्यूरोसिटी थी कि आई शुड अंडरस्टैंड दी लाइफ एंड डेथ्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि वी शुड, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर इसमें फ्यूनरल की भी सेग्रीगेशन था. तो क्लारा क्योंकि वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और मीरियम जो है ब्लैक कम्युनिटी से, इनके फ्यूनरल के सिस्टम्स में सेग्रीगेशन था और मतलब सेपरेट थे, एलिमेंट्स सेपरेट थे. सो क्लारा बहुत ज़्यादा शी वाज ड्रॉन टूवर्ड्स दिस थिंग, और ये लोगों के इस तरह ग्रेव्स को विज़िट करना शुरू कर दिया इसने. एंड शी ऑब्जर्व्स फ्रॉम अफार, remaining detached and silent. However, she gradually confronts her own prejudice and forms a fragile connection with a young black woman named Miriam. तो ये फिर जब फ्यूनरल्स पे जाती थी तो एक दिन ये एक ब्लैक वुमेन से मिली मीरियम, और ये उसके थोड़े क्लोज हो गई, और इट वाज जस्ट अ फ्रेजाइल कनेक्शन, एक बहुत हल्का सा कनेक्शन था, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो इस मीरियम का भाई मर जाता है. And as the story progresses, Clara's involvement deepens and she navigates the complex racial and social dynamics of the society and ultimately questioning her own place within it. Exploring the themes within the given short story, A Watcher of the Dead. So, the very first theme is the racial tension and inequality. The story exposes the deeply rooted racial division and the restriction placed on black individuals based on solely on their skin color. तो हमारे पास रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस या डिविजन्स या सेग्रीगेशंस इसी पे होती हैं कि हर इंसान का किस किस्म का स्किन कलर है या टोन है, और इन ब्लैक इंडिविजुअल्स इधर रेशियल टेंशंस और इनइक्वालिटी से गुजरते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में. देन वी हैव लॉस एंड ग्रीफ. तो लॉस इज़ व्हेन यू लूज अ पर्सन एंड ग्रीफ इज़ द बेसिक सॉरो और द मोर्निंग. So grief and mourning are universal experiences, but the story also explores how societal barriers can complicate and restrict how people grieve, particularly in marginalized communities. तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि इन लोगों के फ्यूनरल्स में भी सेग्रीगेशंस थी. वाइट
men of the society differently funeral arrange करते थे और black community differently funerals arrange करती थी because there was the segregation in the society और societal barriers भी थे जिसकी वजह से people used to grieve differently और ये marginalized communities के लिए particularly था. Then we have the power of memory and storytelling. So थर्ड थीम में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो लाइफ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हमेशा मेमोरी में रहते हैं बट स्टिल वी यार्न फॉर होप. हम होप करते हैं बिकॉज होपलेसनेस जब आ जाए तो देन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट और एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म और इंसान ऑप्टिमिस्ट नहीं रहता. तो एवरी ह्यूमन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और होप करता है कि ओके इन द फ्यूचर थिंग्स विल गेट गुड एंड इक्वालिटी विल प्रिवेल. तो देन वी हैव द रोल ऑफ रिचुअल एंड ट्रेडिशन. तो रिचुअल्स ऑफर solace and a sense of continuity in the face of loss and injustice. तो सोलास जो है वो कंसोल को कहते हैं कि जब आप एक ग्रीफ में हो और स्टिल you have that calmness in yourself, you have the tranquility. इस तरह है. तो हमारे जो रिचुअल्स और कल्चर है इवन व्हेन जो क्लोज्ड वंस या रिलेटिव्स मर जाते हैं तो स्टिल हम प्रे करते हैं कि आई विश एंड वी ऑल विश कि हमारे दिलों में सुकून हो या सुकून आ जाए. एंड ओके सो द लास्ट थीम इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन एंड होप. So despite the oppressive context, the story leaves a glimpse of hope for personal and societal transformation. So redemption का मतलब है to redeem, like किसी भी एक कॉन्सेप्ट एलिमेंट के लिए आप कंपनसेट करो एक दूसरे बंदे को. सो वट एवर वी गो थ्रू इन आर लाइफ्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड दैट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड अस और सराउंडेड बाय अस. तो देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडेम्पशन कि आप उसको कैसे कंपनसेट करते हो अपने एक आपने गलत काम किया है दूसरे के साथ. सो देन यू कंपनसेट द अदर पर्सन विद एनीथिंग गुड इन देयर लाइव्स. हमारे पास कुछ कोटेशंस हैं दैट आर अलाइंड विद द थीम्स वी हैव नाउ डिस्कस्ड. सो द फर्स्ट इज़ डेफिनेटली द रेशियल टेंशन एंड इनइक्वालिटी. तो इसमें एक कोट है, यू शुड नॉट वॉक हेयर आफ्टर डार्क, द वुमन सेज हर लो वॉइस एंड हरिड. There are bad times for us. Now this highlights the constant fear and vulnerability the black South Africans faced under apartheid. तो हम कभी भी रात में इस तरह बाहर नहीं जाते या वॉक नहीं करते बिकॉज देयर इज़ द सेंस ऑफ फियर. तो ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के लिए बोला है क्योंकि द government or the authority they were having on themselves were the white people. Then we have loss and grief. The little grave, his voice catches. It makes me feel empty inside. Now this statement says that this simple statement conveys the protagonist's profound grief for his lost child. The third quote is we must remember. He says we must keep their memory alive for ourselves, for them. Now this important quote highlights the remembering of the past and honoring the stories of those who are gone. ये कोटेशंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वेन एवर यू आर गिविंग क्रिटिकल एनालिसिस और द समरी और यू आर राइटिंग एन आंसर इन द पेपर so you can add these quotations with explanation and it will give your answer the very depth teachers are finding. Moving towards the other quotations, the role of ritual and tradition. So the quote is, he lights a match and sets fire to the paper corn of incense, a ritual that soothes some aches within him. Now, the act of performing traditional rituals provides comfort and connection to his cultural
heritage. Now whenever if we take the example of our daily life, so our elder ones और जो aged होते हैं हमारी फैमिली में या इमीडिएट फैमिली में, तो हमेशा वो कल्चर को फॉलो करते हैं बिकॉज कल्चर में एक सेंस ऑफ कामनेस होती है, ट्रैंक्विलिटी होती है, एक कनेक्शन होता है दैट गिव्स पीपल solace और स्मूथ्स आउट द एक्स इन देयर हार्ट्स। तो वो उनको बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं अपने कल्चर को फॉलो करना, कल्चरल हेरिटेज को। देन वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन एंड होप। सो द कोड फॉर दिस इज, he looks at the stars, they seem different tonight, more remote yet closer, holding a secret promise he couldn't decipher. Decipher का मतलब है to decode a technical message। और इधर जो है ऑक्सीमोरॉन या पैराडॉक्स का जिक्र है, more remote yet closer। पैराडॉक्स ये होता है कि व्हेन यू हैव टू कॉन्ट्ररी आइडियाज, टू ऑपोजिट आइडियाज इन अ सेंटेंस, whereas oxymoron says that you have two contradictory ideas, like two opposite ideas in a word. So we here have paradox, more remote मतलब बहुत दूर है, yet closer still करीब है। So the explanation to this quote is, the vastness of the night sky offers a sense of hope and the possibility of something beyond the immediate struggles of hope for personal and societal transformation. So whenever at night we look at the sky, तो हम एक sense of hope में होते हैं और possibility हमारे दिलों में होती है, minds में होती है कि इंशाल्लाह next day हमारे साथ कुछ अच्छा होगा and we hope for something better. So this is what it was talking about, lack of nihilism or existentialism or absurdism and the more of hopefulness or optimism towards the critical analysis of the short story. So the असल में critical analysis में कभी भी headings नहीं होती, but just for your understanding और याद करने के लिए मैंने headings डाली हैं कि आप लोगों से points ना भूल जाएं। सो सोसाइटल कमेंट्री है, वही सारे जो थीम्स थे वो इधर हम लोग रख रहे हैं, होप एंड रेजिस्टेंस, यूनिवर्सल थीम, सोसाइटल कमेंट्री। सो गॉर्डेमिर uses the story as a powerful critique of apartheid, highlighting the racial tensions, inequality and suffering is inflicted. The author's silence can be seen as a reflection of the forced silence and powerlessness experienced by many under oppressed regimes. तो ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा इनसाइट्स देती है अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में, जो कि हाईलाइट करते हैं रेशल टेंशन्स, किस तरह के कलर के ऊपर लोग जज करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी होती है या रेशियल इनइक्वालिटी होती है, और सफरिंग जो है कनेक्टेड होती है इंडिविजुअल्स के साथ। तो ये नरेटर जो साइलेंस है थ्रू आउट दिस शॉर्ट स्टोरी, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह एक अपर अथॉरिटी फोर्स करती है साइलेंस, और जब ऐसे लोगों के पास पावर नहीं हो तो ये पावरलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अंडर द ऑप्रेस्ड रिजीम्स में होती हैं। So the next we have is the universal themes. While grounding in a specific historical context, the story explores universal themes like loss, grief, memory, and the importance of remembering the past. Now what happens is हमारे पास कुछ यूनिवर्सल थीम्स हैं, जैसे कि लॉस है, लॉस ऑफ अ पर्सन भी हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, लॉस ऑफ पावर भी हो सकता है। यू कैन टेक दिस द वर्ड लॉस इन अ वेरी यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट। ग्रीफ, हाँ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी नहीं होते, रिलेटिव्स भी नहीं होते, वी ग्रीव फॉर देम। And if we do not have power in our hands, we cannot live our life according to our rules and regulations. तो उसमें भी ग्रीफ बनता है। देन वी हैव मेमोरी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग द पास्ट। किस तरह हमारी मेमोरी में सब कुछ स्टोर्ड होता है, बट स्टिल वी होप फॉर द बेटर इन द फ्यूचर। So the watcher struggles to cope with his loss, resonates with anyone who have experienced similar pain. होप एंड रेजिस्टेंस में जब हम लोग एक कोर्ट में
कोटेशन में हम लोग नाइट को डिस्कस कर रहे थे या स्काई को डिस्कस कर रहे थे, आसमान को, अंधेरे में स्टार्स को डिस्कस कर रहे थे, तो वो किस तरह एक सेंस ऑफ होप हमें देता है। सो थ्रू आउट द स्टोरी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं कि अपार्थाइड है और ऑप्रेसिव रिजीम्स हैं एंड देयर्स दी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन या डिविजन, still we will always hope for the best, for the better future. Now we have the literary techniques that the author has used. So Gordemir masterfully employs minimalist prose and evocative imagery to convey complex emotions and social commentary. अब इस जो हमारे पास ऑथर हैं, साउथ अफ्रीकन ऑथर, इसने एक लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ किए हैं क्योंकि प्रोज में वो बहुत ज़्यादा मीनिंग और डेप्थ ऐड करता है, कॉम्प्लेक्स इमोशंस ऐड किए हैं बाय कैरेक्टर्स. So the sparse dialogue and introspective narrative creates a sense of intimacy and emotional depth. Emotional stance bhi hai idhar. Then we have limitations. Some may argue that the focus on the internal struggle of the individual protagonist could overshadow the broader context of the apartheid systematic injustices. तो इसमें ये बता रहे हैं कि अब रीडर्स जो हैं वो यही सोचेंगे कि ओके वी हैव टू talk about protagonist and what she is going through, the internal and the external conflict she faces. But ये इस पे भी बात हो सकती है कि किस तरह कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपार्थाइड को डिस्कस किया है, कितने इनजस्टिसेस हैं, एंड एडिशनली द अनएंडिंग एम्बिग्विटी. So overall, a white teenager grapples with her identity and confronting racial boundaries. A Watcher of the Dead is a powerful and thought-provoking story that uses personal tragedy to illuminate the wide social and political realities of apartheid South Africa. तो इसमें ओवरऑल एक टीनेजर है जो कि she talks about how the racial boundaries are set and in this the current society she lives in, और किस तरह ये पर्सनल ट्रेजेडी के साथ इंटरट्वाइंड है. So the themes are specific to its context and the story resonates with the readers beyond its historical setting due to its exploration of universal human experiences and the enduring power of hope resistance in the face of injustices. तो किस तरह ये स्टोरी जो है रीडर्स के साथ कनेक्ट करती है क्योंकि डिस्पाइट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या सेटिंग इसमें यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के थीम्स डिस्कस किए हैं, जैसे होप है, पावर है, रेजिस्टेंस है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है. So readers can connect to it. Let's talk about the symbolism, even that is very important in any literary piece. तो सिम्बलिज्म हमें हमारे पास जो है वो एक लिटिल ग्रेव है, देन वी हैव स्टार्स, द इंसेंस, द वॉचर्स साइलेंस एंड द वुमेन वार्निंग. So the first one is the little grave. It represents the loss of innocent hope and the future under apartheid. It also symbolizes the countless forgotten victims of oppression. तो graves हमेशा ये चीज़ explain या it talks about कि किस तरह एक इंसान, because it is taken as a symbol, so you can connect it with the thing of how you are you have lost a thing, a hope, a innocent human and the future. The stars offer a glimpse of something beyond the immediate struggle, hitting at hope and the possibility of change. तो स्टार जो है समथिंग, जब हम स्काई पे स्टार्स को देखते हैं तो दोज आर नॉट रीचेबल, हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते. तो ये इट टॉक्स अबाउट द इमीडिएट स्ट्रगल्स और हिंटिंग एट होप के ओके वन डे हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे एंड देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एंड समथिंग गुड विल हैपन. Then we have incense. Now it represents tradition, cultural heritage and a form of personal solace in the face of grief and injustice. So हमारे जो cultures हैं हम उनको follow करते हैं so that we are more connected and more rooted in our culture. Watcher's silence symbolizes his personal pain and the collective silence imposed by fear and oppression. तो हमारे ऊपर जब भी कोई जालिम रूल कर रहा होता है तो हम हमेशा oppressed होते हैं, fearful होते हैं, we have the pain in our hearts, and then it is the collective fear or silence of a community.
Then we have the woman warning represents the constant threat and vulnerability faced by black individuals under apartheid. तो ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज़ अ कांस्टेंट थ्रेट, वी आर नेवर हैप्पी, एंड vulnerability means when you are vulnerable towards something, when you get affected to certain circumstances faced by any community, but here it is shown the black individuals under apartheid, एक ऐसी movement जिस पे आप लोग उसके एक चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हो, and that is known as the apartheid movement, and then you are vulnerable towards the situation. Talking about the literary devices or the figurative devices we have in the short story is, one is the symbolism, then we have the irony and the foreshadowing. Symbolism का ये मतलब है कि एक ऐसी चीज़ों को सिंपल बना के आगे फोर फ्रंट पे स्टोरी को कवर करना. इधर सिंबलिज्म ये है कि funerals represent more than a death. They symbolize the social injustices and suffering of the black community under this movement, apartheid. So Miriam's head wrap embodies resilience and cultural identity. तो सिंपलिज्म ये है, ये लोग बात कर रहे हैं कि डेथ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देता या इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में मीनिंग नहीं देता जितना फ्यूनरल देता है. सो दे सिंबलाइज्ड फ्यूनरल फॉर द इनजस्टिसेस एंड सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी. सही है. उसके बाद आयरनी है. आयरनी का मतलब ये है कि डिस्कशन एक चीज़ पे हो रही हो और बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ परसीव की गई हो. So Clara's initial morbid curiosity develops into genuine empathy, now challenging her own preconceived notions. Now there are two words, sympathy and empathy. Sympathy is जब आप किसी के दूसरे के कहें कि ओके कंसोल करें ये सब. Empathy is when you stand in the shoes of the other person and feel the same problem for yourself as well. So then we have foreshadowing. Hence are the dangers and limitations of transgressing racial boundaries. Foreshadowing का मतलब यह है कि जब एक कैरेक्टर है उसको फ्लैशबैक्स और फ्लैश फॉरवर्ड्स आ रहे हों और स्टोरी हमें कुछ आगे ग्लिम्सेस नज़र आए हों तो वो फोरशैडोइंग होता है. तो hence are the dangers and limitations of transgressing racial boundaries. तो इसको foreshadowing ये हो रही होती है कि what if in the future the things get worse for racial segregation या division. Coming towards the discussion part, so we have clash of culture, then we have individual versus societal change, silence and power, and the symbolic significance of the funeral. Clash of culture में यही है कि it highlights the cultural how the culture is divided between the white and the black communities, और किस तरह क्लारा जो है black funerals के पास जाती है, attend करती है कि वो understand करना चाहती है and she wants to observe the other one as well. Like ये तो खुद white community से belong करती है but she wants to observe the black community as well क्योंकि इनकी funeral में segregation होती है. एंड शी लेटर ऑन इवन अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट विद मीरियम जिसका भाई भी मरा होता है या फ्यूनरल उसका अटेंड करती है. And then we have individual versus societal change. So Clara's personal growth is juxtaposed against the larger issue of systematic racism, while she challenges her own prejudices, and the story subtly suggests the limitations of individuals' effort without broader societal change. तो juxtaposed का मतलब है to keep things side by side. तो इसका जो personal growth है वो it was aligned with the larger issue of systematic racism when she was growing. तो इसका सोसाइटी में इशू था apartheid का, रेसिज्म का, रेशियल सेग्रीगेशन का या रेशियल डिवीजन का. तो ये वर्सेस हो जाता है while she challenges her own prejudices. prejudice मतलब things she is biased upon. So the story subtly suggests the limitations. तो ये story lightly suggest करता है limitations कि किस तरह एक individual को अगर हम पढ़ें तो how different their life would be. And if we talk about the external thing, so those were the historical context of the apartheid movement. Then we have silence and power. So silence जो है हमेशा हर एक की लाइफ में और इवन इस शॉर्ट स्टोरी में
सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह अगर लोग कहते हैं कि ओके somebody is talking to you and you are not liking his or her tone, so just be silent and ignore कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो silence हमेशा एक you even people say that silence is itself an answer. तो साइलेंस जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. देन वी हैव सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्यूनरल. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड अगेन इट इज़ रिपीटेड. सो इधर है द फ्यूनरल एक्ट्स एज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द लार्जर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी अंडर एपेटाइड. इट बिकम्स अ स्पेस फॉर कलेक्टिव एक्सप्रेशन, ग्रीफ एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन. तो सिग्निफिकेंस जो है फ्यूनरल का वो ये है कि हमारा जो कलेक्टिव ग्रीफ होता है और जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस टाइम पे, तो इट इज़ अगेंस्ट ऑपरेशन. कभी हम खफा होते हैं, कभी हम एंग्री होते हैं या एंगर में होते हैं. उस टाइम पे हम लोग हमेशा पेरेंट्स की बात नहीं मानते या वी आर अगेंस्ट ऑपरेशन और हम हार्शली बात करते हैं, हार्श साउंड करते हैं. सो दीज थिंग्स आर अगेंस्ट ऑपरेशन. एंड a funeral is basically highlights the importance और struggle for freedom कि इंसान struggle करते करते मर गया under this apartheid movement. Uncovering the important quotations with explanations. So we have 7 quotations and let's begin. The first one is, she stood at a distance, an alien in a shifting crowd of black. Now this is the opening line which says Clara's outsider status and highlights the racial divide. अभी इसका मतलब ये है कि किस तरह क्लारा की दो काइंड ऑफ स्टेटस थे. एक ये कनेक्ट करती थी ब्लैक कम्युनिटी के साथ और शी यूज्ड टू बिलोंग टू वाइट कम्युनिटी. एंड हेयर द यूज़ ऑफ एलियन एम्फसाइजेस द कल्चरल एंड सोशल डिस्टेंस बिटवीन हर एंड द मोर्नर्स. जो कि वो ब्लैक कम्युनिटी मातम मना रही थी किस तरह अपार्थाइड का या अपार्थाइड में इन्वॉल्वमेंट का वो चाहते थे कि ओके दिस शुड प्रीवेल एंड जस्टिस शुड प्रीवेल. लेकिन दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियन एम्फसाइजेस कि किस तरह कल्चरल और सोशल डिस्टेंसेस हैं वाइट कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी में. द सेकेंड कोटेशन इज दैट फॉर अ मोमेंट अंडर द रॉ सन द वाइट चाइल्ड एंड द ब्लैक वुमन looked at each other, the space between them bridged by something that had no name. Now this is the moment of connection that transcends racial barriers and suggests a shared humanity. इस टाइम पे जब मदर और चाइल्ड की बात है, so there is the concept of motherhood, and here it's written something that had no name. Now it emphasizes the complexity and unspoken nature of the interaction. किस तरह ये humans interact करते हैं, they create that bond between each other. Third quote is about death. So these deaths were different. They were deaths that were lived with, deaths that were a continuation of life. So now this quote reflects Clara's initial perception of black funeral as exotic and different from her own experiences. And I have already told you funeral में division था या segregation था. So it hints at her lack of understanding about the realities of life and death in the black community under apartheid. जो apartheid movement को follow करता था, support करता था, उसको one by one इधर इतने harsh struggles करने पड़ रहे थे लाइफ में, या तो वो उनको मार दिया जाता था because violence बहुत था. The fourth one is the white cars with their white occupants steamed past, oblivious to the black tide of humanity flowing towards the cemetery. ये कोड रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट कम्युनिटी को कि वाइट कार वाले लोग हैं वो वाइट पीपल हैं विद देयर वाइट ऑक्यूपेंट्स जो वाइट कॉलर होते हैं ना, लीड क्लास, स्ट्रीम्ड पाथ past oblivious to the dark tide of humanity flowing towards the cemetery. Oblivious का मतलब है कि when you are ignorant towards something या आप past को remember नहीं कर सकते. And cemetery is the burial, ठीक है.
So this image symbolizes the indifference and ignorance of the white community towards the struggles and experiences of black South Africans. ये जो वाइट साउथ अफ्रीकन्स हैं, ये अपने ही मज़ों में है, इलीट क्लास है, वाइट कार्स चलाते हैं, वाइट ऑक्यूपेशंस हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं इनके पास, एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द ब्लैक कम्युनिटी ऑफ साउथ अफ्रीका. सो द contrasting color emphasizes the racial divide and lack of connection. The fifth quote says, "They were singing now a slow that rose and fell like a beating of the crowd." अब ये जो लिखा हुआ है डिफरेंट लैंग्वेज में, ये असल में चाइनीज़ में लिखा है और इसका मतलब है सैड मेलोडी. सो लोग जैसे क्रिश्चियंस हैं और ये लोग फ्यूनरल्स में सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगाते हैं, सॉफ्ट या सैड इस तरह का. So this description brings the funeral scene to life and evokes a sense of shared grief and resilience. The music becomes a unified force and transcending individual experience and creating a collective expression. तो जब भी फ्यूनरल्स में ये लोग एक सैड मेलोडी सी लगाते हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि एवरीबडी इज़ क्वाइट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट द गुड मेमोरीज ऑफ दैट पर्सन, के उनके साथ इस बंदे की कैसी मेमोरीज गुजरी है. The sixth one says, "It was the silence that frightened her, the dead silence of the white car in the midst of the singing." So now this moment highlights Clara's fear and awareness of the dangers of transgressing racial boundaries. The silence becomes a symbol of the potential consequences of her action and the ever-present threat of violence. तो ये जो साइलेंस है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन वन ऑफ द थीम और सिंबल्स, कि ये itself it is an answer, and even if you do not speak anything, silence speaks everything for you. तो इधर क्लारा की जो है बहुत ज़्यादा शी वॉज अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, दैट वाई देर इज सेग्रीगेशन इन एवरीथिंग and why people do judge on the basis of color. She had looked into the well of their common humanity and had found fear. Now this is the concluding quote, and this concluding line encapsulates the story's central theme: the difficulty of overcoming ingrained prejudice and the limitations of individuals' action in the face of systemic oppression. It leaves the reader pondering the complexities of racial dynamics and the possibility of true understanding and connection. तो इसमें सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया है कि किस तरह लोग क्यों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, एंड इट इज़ हैविंग द लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, क्योंकि सिस्टम जो है वो प्रेस्ड होता है, तो इंडिविजुअल्स मूव अहेड in the counter action, and how individuals face difficulty in overcoming the actions of the systemic oppression. सिस्टम का जो ऑपरेशन है वो किस तरह ओवरकम करते हैं individuals. The conclusion of this long lecture, and I'm sorry for it, but it is the very first video on YouTube, and therefore I made it long so that you people can understand it in great depth. A Watcher of the Dead is a powerful exploration of racial dynamics. मतलब किस तरह एक रेस पे या कलर पे या कास्ट या क्रीड पे लोग कितना सेग्रीगेशन करते हैं, इंडिविजुअल ग्रोथ कैसी हो रही थी, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कन्फ्रंटिंग सोसाइटल नॉर्म्स. So now it challenges readers to examine their own biases and question the injustices around them. While set in a specific era, the theme remains relevant, encouraging empathy and understanding across social divides. जो मेरे लिसनर्स हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि whenever you are having any literary piece, poem है, short story है, novel है, drama है, कुछ भी है, you can always interpret that literary piece in your own way. सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी इंटरप्रेट कर दिया है अपनी तरफ से तो यू हैव टू गो विद इट. नो, यू कैन गो विद इट, बट इवन यू कैन ऐड योर ओन इंटरप्रिटेशन. तो ये शॉर्ट स्टोरी इसी तरह इंटरप्रेट हो रही थी. और अगर आप लोग अ वॉचर ऑफ द डेड ये टाइटल भी देखें तो
वॉचर जो है ये लड़की हो गई क्लारा, और ये लोगों को मरते हुए देखती थी या फ्यूनरल्स को देखती थी, उसको अटेंड करती थी, so that she can have the insight or the learnings of life and death of two different communities, white community and black community. This was all about my video. Thank you so much for watching till the very end. अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो feel free to comment down below, subscribe to my channel, and अगर कुछ भी समझ आया है इस वीडियो में तो hit the like button, share it as much as you can. Take care of yourself. Allah Hafiz. Will meet you guys in the next video.